हेलो गाइस, कैसे आप सब। ये मेरा थर्ड पार्ट है जोधपुर सीरीज़ का। सो बेसिकली आज हम लोग आए जोस्टल जोधपुर में एंड दिस इज़ द बेस्ट प्लेस टू स्टे एवर। मैं आपको अभी हर एक चीज़ बताऊंगा कि कहाँ पे क्या है। जोस्टल जोधपुर ये प्रॉपर्टी जो है लाइक सिंगल बिल्डिंग प्रॉपर्टी है, पर ये इतनी अच्छी मेंटेन्ड है और इतना अच्छा यहाँ पे एम्बियंस है, यहाँ पे सब कुछ है। मैं आपको अभी एंट्रेंस का एक क्लिप दिखाऊंगा, फिर धीरे धीरे जाके मैं आपको हर एक चीज़ बताऊंगा कि यहाँ पे क्या है और यहाँ पे आपको क्यों आना चाहिए। सो अब बने रहिए इस व्लॉग में। ये है जोस्टल जोधपुर का मेरा थर्ड पार्ट ऑफ जोधपुर। ओके, सो दिस इज़ द प्ले एरिया। ये काफ़ी कूल है, देखो ग्राफिटीज एंड ऑल सारे बने हुए यहाँ पे। दिस इज़ माई फेवरेट वन, आई डोंट नो व्हाई बट यार दिस माई क्वाइट फेवरेट। एंड या दिस क्वाइट ऑल द गेम्स आर ओवर हियर, यू कैन वॉच टीवी एंड जस्ट चिल विद योर फ्रेंड्स ओवर हियर। लाइक दिस इज अ कॉमन एरिया, यू कैन डू व्हाटएवर यू वांट ओवर हियर। We also have a cafe over here. This cafe is pretty cool. You can have a drink, or you can smoke over here. If you guys do, you can. We do not have Wi-Fi. We can talk to each other. Nice. That's the reason I love Zostel. Life is what happens between coffee and wine. Check out the restaurant area of Zostel. This is lovely. Like you can have a whole view of Merangar Fort over here. Also Jashwantada over there. If you can see, this white one is Jashwantada. This one. So this is like a beautiful place to dine in. If you are coming to Zostel, please have a dinner over here. It will be literally very beautiful. Also, there is this space downstairs, but while you climb the ladders, there's also a space over here. So this is the most beautiful view of Jodhpur. I can just show you. Check it. So you can see almost whole Jodhpur from here. Such a beautiful place. Okay guys, so today is like third morning of my trip, and yeah, I'm just signing off from the vlog today because I need to get ready and go to places. Today I'll visit Merangar Fort and Jashwantada. I'll show you the beauties of these two amazingly built monuments. So हम लोग चलते हैं, देखते हैं। तो मैं इस व्लॉग को अभी एंड कर रहा हूँ। बाय बाय।